Hello everyone, this is Riddhi and I am making this video to address you people on the topic role of PET scan in the diagnosis of cancer. So what is a PET scan? PET stands for positron emission tomography. It is an imaging test used to detect the functioning of the body's organs and its tissues. Just like the other imaging tests which are the CT scan or the MRI or the X-ray, ये आपके बॉडी के स्ट्रक्चरल चेंजेस बताता है. The PET scan shows the physiological and chemical changes in the body by creating a three-dimensional image of the inside of the body. So, what is the procedure? Is PET scan painful? What is the mechanism of action? So, PET scan is not painful. The mechanism of action is very simple. Radioactive dye or the radioactive traces are injected into your body through inhalation, oral or infusion routes. So, during certain times और ड्यूरिंग सर्टन डिजीजेस हमारे बॉडी के टिश्यूज़ की केमिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है. सो व्हेन दीज रेडियो एक्टिव ट्रेसेस और रेडियो एक्टिव डाइज आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, ये उस जगह जाकर फोकस करते हैं जहाँ की टिश्यू केमिकल एक्टिविटी बढ़ गई है. उसके बाद एक पेट स्कैनर यूज़ करते हैं एंड दीज पेट स्कैन्स एग्जैक्टली डिटेक्ट द लोकेशन एंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पे केमिकल एक्टिविटी बढ़ गई है. So what is the use of PET scan? So as we already mentioned कि PET scan आपके बॉडी के हाई एफिनिटी हाई केमिकल एक्टिविटी वाले एरियाज़ को डिटेक्ट करता है. सो ये स्कैन पे ब्राइट स्पॉट्स जैसे अपीयर होते हैं, दिखते हैं. सो ये आपके डॉक्टर को एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली बताता है कि कौन से लोकेशन पे कैंसर देयर इज अ प्रेवलेंस ऑफ कैंसर. सो इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द सॉलिड ट्यूमर्स ऑफ the brain cancer, cervical cancer, colorectal cancer, esophageal cancer, head and neck cancer, lung cancer, lymphoma, melanoma, pancreatic, prostate and thyroid cancers. So many of the people ask that is PET scan risky or is risk involved with PET scan? So the PET scan involves the use of radioactive tracers, but exposure to the harmful radiation is minimal. The radioactive tracer is typically attached to sugar glucose, which makes it easy for the body to eliminate the tracers. People may have allergic reactions, but it can be controlled and can be avoided. So I hope this short video helped you with a lot of information on PET scan. This information is brought to you by Cancer Rounds. You can visit our Facebook page or visit our website cancerrounds.com. So have a good day. Thank you.